Hello everyone, I'm Vikrant and I'm here back with you guys, and today in this video I have brought you an amazing chapter from class 12 CBSE. Okay, so I request all of you to please open up your book Flamingo right now, as we've been doing all the chapters these days from Flamingo. Okay, so we are going to complete our book Flamingo first of all, and then later on we're going to move on to the another one with stars. Okay, so I hope everybody has done it. You've got your book in your lap, and now we are going to see the chapter. Fine. So the chapter number is third. Okay, so you can open it up now. Deep water. The name of the chapter is Deep Water. Fine. Gehra Pani. Fine. By who's written it? William Douglas. Okay, William Douglas has written it, and he was born on 1988. Sorry, and he died on 1980. Fine. So the thing is, like, William Douglas was an advocate. Okay, William Douglas क्या थे? एक advocate थे, and with that he became a judge also in a court. वो एक court में judge भी थे. And later on, this chapter that we are reading here, it is taken from his autobiography. उनकी जो autobiography थी, जो उन्होंने खुद ने लिखी थी अपने बारे में, उसमें से ये जो स्टोरी है ये हमें यहाँ पर दी गई है. लाइक उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि जब वो एक बच्चे थे तो उन्होंने कैसे अपना जो डर था पानी का उसको ओवरकम किया. ही वॉज एन हाइड्रोफोबिक. ठीक है, वो एक हाइड्रोफोबिक थे, सो उन्होंने वो हाइड्रोफोबिया जो था उसको कैसे दूर किया. दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग इन दिस चैप्टर. फाइन. सो द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम देयर, उनकी ऑटोबायोग्राफी से. सो कैरेक्टर इसके अंदर हमारे पास ऑथर हैं, और ये उनकी बायोग्राफी का नेम लिखा है मैंने, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. फाइन. सो ये जो उनका टाइटल था उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक का. सो यू गाइस, इफ यू वांट टू रीड द होल बायोग्राफी ऑफ विलियम डगलस, यू कैन गो टू द मार्केट, you can buy that novel, and then you can read it up. Fine. So but here we just have a single and a small extract that I'm going to explain to you. Okay, so there's a thing, YMCA. It's a pool name. Okay, pool जो है स्विमिंग पूल होता है, जो स्विमिंग पूल के जो एसोसिएशन था उसका नाम था ये YMCA, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन. फाइन. द फुल फॉर्म ऑफ YMCA. आफ्टर दैट देयर इज अ याकिमा written in the chapter, and the Yakima means a place in Washington, USA. There was a river. Fine. Yakima, उनके पास में एक रिवर थी जो कि बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही डेंजरस थी. फाइन. उसके बारे में भी डिस्कशन है. सो दिस इज ऑल important thing from the chapter. Now a lot of more things are important, but I cannot write everything on the board, so you have everything in your book. First, I'm going to explain you the summary of the chapter, and then later on you guys can go to your books and read them out. Okay, fine. So let's start. How does it start? The story starts. William Douglas says that when I was just a little kid, I was like around 4 to 5 years maybe. Okay, and at that time I went to Washington DC with my father. He went to Washington with his father, and then there they both went to a sea beach. Okay, वो beach पर गए, and then there he was standing holding his father's hand on the beach, and at that time a big wave just came over him. एक जो बड़ी सी वेव थी वो आई और वो उसके ऊपर से होकर के पूरी निकल गई, and the William Douglas was indulged into it. वो पूरा उसके अंदर डूब गए थे. So at that time William Douglas felt suffocated, and at that time he got to know that he's afraid of water. Okay, like just because वो पानी के अंदर डूब गए थे तो इसीलिए उनके अंदर जो था थोड़ी देर को उनको सांस नहीं आई, सफोकेट हो गए वो. And when he just stood up, at that time he had already made a place for the fear of water in his heart. तो उनके दिल में जो था वो डर बन चुका था, क्योंकि वो उसमें अभी फिलहाल सफोकेट हुए थे. So that fear continued for so many years, and later on when he became 10 to 11 years, he thought that now finally I have to do one thing. What is that? He had to overcome that fear, and that is what he did. Okay, उनको क्या करना था? उनको जो fear था उसको कम करना था, and that's why he said, now definitely what I'm going to do, I'm going to go to a pool. But his mother, उनकी जो mom थी जो उनके साथ में रहती थी, उनकी mom उनको हमेशा याद दिलाती थी कि look, you are not supposed to go to the river, which was Yakima. Fine, you are not supposed to go because it's too treacherous, it's too dangerous, it's too death taken. Fine. So life taken, sorry. So उस तरीके की वो river थी. So that's what his mom always told him, that प्लीज़ डोंट गो देयर, वहाँ पे आप तैरने नहीं जाओगे, बिकॉज इट्स टू डेंजरस. वहाँ पे जो लोग डूबते थे, मरते थे, उनकी स्टोरी जो थी वो हमेशा
डेली पर्पस पे उनकी जो मॉम थी वो उनको डेली बताया करती थी ताकि वो डर के मारे ही वहां पर ना जाए. लेटर ऑन व्हाट हैपन, याकिमा, अ प्लेस इन वॉशिंगटन डीसी. फाइन. सो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक जो हमने बात की कि वो वहां पर रिवर पे जाने के लिए उनकी जो मॉम थी वो मना करती थी. बट दैट्स वाई ही हैड टू फाइंड अ प्लेस, ही हैड टू फाइंड अ प्लेस, a pool, swimming pool properly where he could go and learn swimming. So that's what he did. He went out, he found out a place named YMCA, okay, Young Men's Christians Association. There was a pool, जैसे कि like आप सबके, आप जहाँ पे भी रहते हैं होम टाउन में, आपके सबके वहाँ पर एक पूल रूम होगा जहाँ पर भी आप जा सकते हैं. एंड यू कैन स्विमिंग पूल, पब्लिक स्विमिंग पूल, यू कैन गो, यू कैन पे एंड देन यू कैन लर्न हाउ टू स्विम और you can even swim if you know it already. So that kind of a place he went to. And later on वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने अपने वाटर विंग्स खरीदे, जो पैरों पे लगाने के वाटर विंग्स आते हैं वो. एंड देन he just bought that uniform also of the swimming pool, जो पहन करके जाते हैं, वो ड्रेस भी उन्होंने खरीदी. एंड later on when he went to the pool, उनको कम से कम भी 3 से 4 दिन लगे पानी के साथ थोड़ा सा ईज होने में, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा. फर्स्ट ऑफ ऑल ही जस्ट यूज टू सिट ऑन द एज ऑफ द पूल एंड देन ही वुड जस्ट use his leg like this, and that's all. And later on he went inside the water just day by day, and then when it was his only 4th or 5th day and he started to ease with the water, उन्होंने पानी के साथ थोड़ा आराम फील करना चालू ही किया था. At that time only one day he went earlier than everybody else. वो क्या हो गए, वो जल्दी चले गए सब लोगों से. And at that time he just thought that I'll not go into the water because like if I'll die, like if I'll drawn, who will save me? So that's why he said okay, I'll sit here. वो वहाँ पर बैठ गए किनारे पर, पूल के एज पर. and then he was waiting for rest of the people to come and then he would go into the water. So that's what he was doing. And at that time there came a big brusher boy. Okay, my god, man. And the boy was like around 18 to 19 years old, and he was having a big muscles, rippling muscles, and he was having thick hair on his chest, and he was like a huge guy. And at that time he came and he said, hey Skinny, how would you like to be dug, man? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें उठा करके इस पानी में फेंक दूं? तो विलियम डगलस said, no, 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 you don't do it, don't you dare, please, 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 please. And at that time he just came to the Douglas and he just picked him up and then he threw him in the water. उसने उठाया और उठा करके उनको किसमें फेंक दिया? पानी में फेंक दिया. And at that time William Douglas just landed in a sitting position, and just because he could not breathe properly, he directly went into the water. And at that time he made a plan. जब आप खतरे में होते हो, डेंजर में होते हो, तो आपका माइंड तेज काम करने लगता है, समटाइम्स. सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस, एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ द वाटर. एंड एट दैट टाइम व्हेन ही वाज गोइंग डाउन, ही जस्ट थॉट, उन्होंने सोचा कि यार नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग. व्हाट ही सेड दैट आई विल डू लाइक आई विल गो डाउन and then I'll do what? I'll just go to the bottom of the pool and then I'll hit it with my toe and then I'll come up like a cork and then I'll swim and then I'll go to the edge of the water. So that's what he planned for. Fine, उन्होंने प्लान किया. एंड फर्स्ट जब वो नीचे गए पूरा डाउन, बिल्कुल फ्लोर, तो वो जो पूल था वो एक्चुअल क्या था कि वो 3 फीट तो स्टार्टिंग से था और 9 फीट एंडिंग में था. ग्रेजुअली उसकी जो डेप्थ थी वो बढ़ती जा रही थी. सो दैट इज व्हाट हैपेंड कि वो अब वो 9 फीट वाली जगह पर वो बिल्कुल चले गए थे. सो दैट्स व्हाट ही सेड कि वो जो 9 फीट तो जो था वो मुझे 90 फीट के बराबर लग रहा था जब मैं नीचे जा रहा था. सो दैट इज व्हाट, जब वो नीचे गए और नीचे जाकर के फिर उन्होंने जंप किया तो ही कुड कम ओनली टिल द वाटर लेवल तक आए, लेकिन पूरा नहीं आ पाए. एंड देन अगेन ही वेंट डाउन, फिर वो दोबारा नीचे गए सेकंड टाइम, एंड देन ही ट्राइड टू डू इट एंड देन अगेन ओनली हिज नोज केम आउट ऑफ द फाइन. एंड देन अगेन थर्ड टाइम. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. लेकिन एक भी बार ना तो वो बेचारे अच्छे से सांस ले पाए, ना ही वो चिल्ला पाए, ना ही वो पानी से बाहर आ पाए. और इसी तरीके से 3 से 4 बार उन्होंने ट्राई किया. हालांकि उनके जो लंग्स थे वो बिल्कुल भी एयर नहीं थी उनके अंदर, एंड दे वर अबाउट टू बर्स्ट आउट. बट he tried and he tried. And later on 4th to 5th time when he was trying, he just left everything. He had no courage and no strength left in his body. So that's what he did. He just lied down on the water and allowed him to drown. Fine. So and he was feeling so tired at that time. And he says कि वो जो फीलिंग थी जब मैं पानी में नीचे की तरफ जा रहा था धीरे 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 करके, तो वो फीलिंग जो आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी, दिखाते होंगे डाइवर्स जो पानी में नीचे जाते हैं. सो वेरी रिलैक्स्ड मैनर. एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइंग डाउन इन माई मदर्स लैप, कि मैं अपनी मॉम की गोदी में लेटा हुआ था. दैट्स व्हाट ही सेड. सो
और मैं बहुत ही जेंटली, वो जो पानी था वो मुझे बिल्कुल मेरी मॉम के हाथ की तरह मुझे लपेटे हुए पानी में नीचे की तरफ ले जा रहा था. एंड आफ्टर सम टाइम आई रिमेंबर दैट आई गॉट ऑफ द वाटर. मैं पानी के बाहर आ गया था और मैं जो पूल था उसकी एज पर लेटा हुआ था. एंड जो बाकी के जो मेरे कोच थे वो मुझे क्या कर रहे थे, मेरे को चेस्ट में प्रेस करके मेरा जो वाटर था, मैं पानी पेट के बल लेटा हुआ था, एंड देन दे वर प्रेसिंग मी, एंड देन my all the water inside my stomach that came out, and I felt a little fine at that time. And he says I had already crossed the oblivion. Oblivion is a place, ये एक line है, this is we call oblivion. यहाँ पर life है, यहाँ पर death है. So he says that I had already crossed the oblivion, but I have come back again. So I know the fear of death and actually the death. Fine. So he says that, and later on वो वहाँ पे फिर उनको changing room में ले जाते हैं, and then he sits there for hours, and then he cries a lot. Then from there he goes to home, and at that time he says that that night I didn't even eat, I didn't even do anything, I just went to my bed, I cried a lot, and then I slept it off. Fine. So that is what he did that day. Later on उसके बाद फिर वो वापस से कुछ दिनों के लिए पानी में बिल्कुल भी नहीं गए, कुछ महीनों के लिए. But later on वापस से again there is a thing, he never gave up. उन्होंने give up नहीं किया अपने डर से. Again he did what? He went to a person who was a personal instructor, you say PT. These days everybody is having PT in like studies, in gym, in swimming pool, and everywhere हर किसी को आजकल PT चाहिए. Fine. So that is what he did. उनको personal trainer, he hired a personal trainer, and then that personal trainer took around 6 months, okay, as they started I think in October and they end up in April or July maybe. Fine. So they started learning. उन्होंने सीखना चालू किया. जो उनके पर्सनल इंस्ट्रक्टर थे वो क्या करते थे, पूल के ऊपर एक पुली थी, उस पुली में एक रस्सी बांध करके उनके कमर में बांध देते थे, एंड देन ही वुड जस्ट होल्ड इट, और वो फिर उसके बाद उसको कई बार ढीला छोड़ देते ताकि वो विलियम डगलस नीचे जाए और वो ट्राई करे तैरने का. फाइन. बट अगेन ही विल स्ट्रेच इट. सो दैट इज व्हाट हिज इंस्ट्रक्टर डिड. उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको हर चीज लाइन बाय लाइन, टाइम बाय टाइम उनको सिखाई एक एक करके. फाइन. ही टॉट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू यूज हिज लेग्स. Firstly, he says that my leg stopped working and it was not listening to me at all, but later on they started work on my commands. Fine. So that is what he says about his legs, and then he says like he taught me how to exhale and inhale under the water or outside the water. पानी में जाकर के कैसे सांस लेनी है, पानी से निकल करके कैसे सांस छोड़नी है, and that पानी से निकल करके सांस लेनी है, एंड देन पानी में जाकर के सांस छोड़नी है. इस तरीके की सारी चीज़ें, और लाइक फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हाउ लाइक एवरीथिंग अबाउट द स्विमिंग ही टॉट हिम one by one. And later on after 6 to 7 months he said okay fine, now you are ready to go. अब आप एक पूरे स्विमर बन चुके हैं. You can die off, you can jump into the water, you can go into the sea and everywhere you want to go to. But William Douglas knew that it's my instructor, he doesn't know that I have a fear of water. Fine. So he said okay fine, you are done, thank you so much. And then he had to work himself out. Fine. जैसे कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं तो उनको पता है कि भाई, उनको नहीं पता है कि आपके अंदर क्या डर है, बट ही कैन ओनली टीच यू. बट अंटिल यू डू नॉट टेल देम व्हाट इज योर प्रॉब्लम एक्चुअली, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क इट आउट. फाइन. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, you must talk to the person you can talk to. Only then they'll be able to work it out. Okay. So that's my suggestion for you, and that's the suggestion from William Douglas too. And later on विलियम डगलस जो थे वो अपने सिटी में, अपने आसपास जो टाउन के पास में थी, जो भी लाइक अलग अलग प्लेसेस थे, हैम्पशायर एंड अ लॉट ऑफ cascades and a lot of names are there in the chapter. So he read all, like he went to all the places, he swam across the river, he swam across the sea. Across the sea means from one island to another island, just a far ago, a mile or something. Okay, तो वो बताते हैं कि मैं हर जगह तैरने के लिए गया, मैंने कैंपिंग की हॉट वाटर लेक के पास में, मैं ट्रैकिंग के लिए गया, एंड देन एट दैट टाइम उनके जितने भी फियर थे चढ़ाई करने के, पानी में जाने के, कैनोइंग करने के, राफ्टिंग करने के, सारे डर खत्म हो गए. एंड देन फाइनली इन दी एंड ही जस्ट वेंट टू अ लेक, जहाँ पर कि उनको एक शोर से दूसरे शोर तक जाना था. ठीक है. एंड देन he jumped into the river, and then when he was in the middle of the water, at that time he just saw under the water, and he saw that his fear had actually came back. But at that time he said, okay, you're trying to scare me, oh see, here I go. And then again he would swim. So that's what he did. Again he went on, and then he swam across the river, and that's how he overcame his fear. It means never give up, never throw it in the towel. Fine. So that is what he said.
you should never ever throw it in the towel. You should always work hard to overcome your fear. You should work harder even, so if you have any kind of fear, just overcome it after reading this. Okay, you can overcome that fear. If you have water, like hydrophobia, any kind of phobia you guys are having, then you can just go and overcome it. Fine, never give up and just keep on working. And best of luck for your CBSE 12th exams, which are about to come. Study hard, enjoy your life, enjoy the study, and wait for the next video, and then we'll enjoy again. Bye bye, take care, see ya guys.